start with chapter number 12, that is earliest empire. So in this chapter we will study about expansion of territories, Janpadas, Mahajanpadas कहते हैं, right, and taxation. So you will identify the answers. Now expansion of the territories. So around 3000 to 2600 years ago, a new name was adopted by become a powerful king and was called Maharaj or Samrat. ये बड़े बड़े sacrifice करते थे, right, and they will call अश्वमेध यज्ञ और horse sacrifice. मतलब जो रॉयल हॉर्स होते थे उनको फ्री ऐसे छोड़ा दिया जाता था फॉर द होल ईयर. द हॉर्स वाज फॉलोड बाय बैंड ऑफ चूजन वॉरियर एंड दे कंट्रोल टेरिटरीज दैट इट हैड कवर्ड. हॉर्स क्या करता था, ऐसी वेंडर करता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे हैव टू फाइट एंड दे माइट हैव टू पे हेवी टैक्सेस, प्राइस एज वेल एज कॉन्ट्रीब्यूट स्लेव्स एंड ब्रिंग्स गिफ्ट टू यजन इफ दे वर अलाउड द हॉर्स टू पास. सो दे एक्सेप्टेड दैट जो राजा हैं दे हु वांटेड टू परफॉर्म सैक्रिफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन देम. वो यजन ऑर्गेनाइज करते थे एंड दे वर वेरी पावरफुल. ऑल अदर राजास दे ब्रॉट अ गिफ्ट फ्रॉम हिम एंड द किंग वाज कॉल्ड सम्राट एंड एम्पर. सो द एम्पर वाज द सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल्स ऑफ सैक्रिफाइस. प्राइस परफॉर्म रिचुअल जिसमें स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर होता है एंड द chariots वर chanted tales and the ordinary people, the wish or vaishyas, they brought gifts and some people were excluded from many rituals. Now social evil or class discrimination. In early Vedic period it was easy to describe how people by their occupation. Later Vedic period the price divided people into four. Income ones थे. So according to them each ones have different sets of functions or duties or occupation. The price later said that these groups were decided on the basis of birth. किसके basis पे? Birth के basis पे. Right? They become very rigid. The first one was the Brahmin. And they were accepted to study Vedas and they performed sacrifice and what they give dakshina. और जो क्षत्रियास होते थे वो वॉरियर क्लास के होते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, राइट. दे वर एक्सेप्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल. वैश्यास जो थे वो फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, ट्रेडर्स थे. और जो क्षत्रियस और वैश्यास थे ना वो वेद्स को स्टडी करते थे, क्षत्रिय भी और वैश्य. द फोर्थ वन इज शूद्र. Not much information available. They were mostly laborers and they were craft persons. And they were hunter and gatherers. Many people did not accept the word system laid down by the price, and many thinkers out and among the price they opposed grouping the by birth and occupation. Now Janpads and Mahajanpads. ये क्या है? Political structure of the ancient India appears to have started around 6000 BC. And in Ganga plain semi-nomadical tribal units, some Jana कहते हैं. Early Vedic texts at least several Jans or tribes of the Aryans living in semi-nomadic tribal state. They fight among themselves with other non-Aryan. ठीक है, यहाँ पे आपको देखो कुछ अर्ली वैदिक सेटलमेंट्स दिए हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके सारे अर्ली वैदिक सेटलमेंट्स हैं, राइट. ये यहाँ पे आपके जितने भी हैं लेटर वैदिक सेटलमेंट्स हैं, राइट. एंड हेयर सम मेजर सिटीज आर गिवन टू यू. छेदी, वत्स, कोसला, ठीक है, काम्बोज, गांधर, विज्जी, काशी. ये क्या कुछ आपकी मेजर सिटीज है. नाउ वी कैन से दैट some of the important tracts were Panchla. We can say that some of the important tracts were Panchal, Bareilly, Sursen, Kosla, Kashi, Magadh. ये जो tracts है they were not simple type but they were kingdoms and republics. इनको हम जनपद कहते हैं. And these republics it was Kshatriyas family who owned the land and had a political power. जिन्होंने land own करा उनकी क्या थी, अपनी अपनी political power थी. And the type of government they have that is oligarchs, right? And the people of Janpads were also made earthen pots जिसे हम painted grey ware कहते हैं. Next is given, इन्होंने महाजनपद सेटअप करे. 16 there were 16 total and they continuously fight another and only 4 power महाजनपds were continuously fighting to capture another territory. We have Magadh, Vats, Avanti और कोसला. इन बहुत को क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ, महाजनपद कितने हो गए, 16 हो गए. And the care of kingdom was the area of Bihar, Bengal, and around 6600 BC several kingdoms did not have hereditary king. इनको हम क्या कहते हैं, गण संघास and republic. Now what is taxation? So the rajas of Janpadas depend on the occasional gift brought by the people. They were Mahajanpads, required more resources, built huge forts and maintained big army, pomp and show,
एंड एम्प्लॉयड ऑफिशियल जिन्हें हम अमात्यास कहते हैं। तो पहले जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे ना बड़े बड़े, उनको हम अमात्यास कहते हैं। वो क्या करते हैं, रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, राइट, एंड 1/6 भाग और शेयर ऑफ द क्रॉप वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम फार्म। एनिमल्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस फ्रॉम द हर्डर्स। 1 day वर्क फॉर द किंग एवरी मंथ बाय द क्राफ्ट पर्सन। टैक्सेस ऑन गुड्स ब्रॉट सोल्ड, पार्ट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे हाइड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, गम्स हो गए, रेसिन्स हो गए, फ्रॉम द हंटर एंड गैदरर। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू थी। लेटर बार्टर सिस्टम चेंज एंड कॉइन्स लाइक सिल्वर, कॉपर, गोल्ड वर इशूड बाय द स्टेट। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, धीरे धीरे क्या हुआ, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ। आयरन प्लोशियर इंक्रीज एंड दे कैन टर्न ओवर हैवी क्ले सॉइल एंड बेटर देन द वुडन प्लोशियर। इट हेल्प्स टू ग्रो मोर ग्रेन्स एंड पीपल दे स्टार्टेड ट्रांसप्लांटिंग पैडी आल्सो। They were planted in fields have more space and this process called transplantation. इससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हो गई एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी इन अ बैक बियरिंग वर्क, जनरली स्लेव मैन जिसे हम दास कहते हैं, वुमेन जिसे हम दासी कहते हैं, they were landless labor, they were engaged in this work and the king also encouraged the use of iron plowshare. आयरन का जो प्लोशियर था उसका जो यूसेज था वो भी क्या हुआ, इस टाइम पे बढ़ गया। नाउ आपको यहाँ पे केस स्टडी दी हुई है मगध के बारे में। Magad was a part of present day Bihar in the map. Magad became the most rich and powerful Mahajan. Right? 2 rivers, Ganga and Son, flowing through the Magad made the soil fertile. जिसने water को hold as very important waterways. Traders travel in big boats up to the sea through Ganga and the coast of South India. Right? Next आपको यहाँ पे दिया है कि बिग फॉरेस्ट जो थे मगध के, दे प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्ट्स एंड चैरिट्स। अबेंडेंट आयरन्स ऑल वर प्रेजेंट इन मगध, और जो आयरन इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम टू मेक स्ट्रॉन्ग। आयरन से आप क्या बनाते थे, टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, राइट। यहाँ पे दो पावरफुल रूलर थे मगध में, जो आपके बिंबिसार और आपका अजातशत्रु, राइट। दे कॉन्क्वर्ड अदर जनपद्स, वेरी मीन्स कैपिटल ऑफ मगध राजगीर थी, और जो लेटर अजातशत्रु ने क्या करा, अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा पाटलिपुत्र, ठीक है, जो प्रेजेंट डे आपका पटना है। एंड इट इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ रिवर गंगा, सरायू सन फैसिलिटेट्स हिज वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट। द ओल्ड बुक दैट वाज मेंशन्ड हाउ अजातशत्रु यूज्ड टू वेपन्स इन द वॉर, कैटापुल्ट और विच इज कवर्ड, दैट इज मेक एक बिग और हेवी आयरन बॉल। द सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु वाज वीक एंड you can say that Mahapadmanandan was another important ruler. He extended his control up to northwest part of subcontinent. और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, he conquered Magad and what did he establish? Established Mauryan dynasty. इन्होंने क्या करा, मौर्यन डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट करा। उसके बाद आ जाती है आपकी केस स्टडी वज्जी की और अर्ली रिपब्लिक। वाइल मगध वॉज मोस्ट पावरफुल रिच किंगडम, वज्जी जो था वो भी पावरफुल था, रिच गण और संघा में आता था। गन मैन मीन्स क्या होता है, ग्रुप, और संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इन गन और संघ देयर वर नॉट ओनली वन बट मेनी रूलर्स, ईच वन ऑफ देम हैज राजा। दे परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, दे मेट इन द असेंबलीज टू डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड, एंड द मेन संघास वर लिचवीज, मल्ला एंड योर वज्जी, ठीक है। हम बात करें जो चेयरमैन होते थे आपकी काउंसिल के, उनको हम गण प्रमुख कहते थे, हेड ऑफ द डेमोक्रेसी। एंड if we talk about Ajatashatrus and Vajjis, so Ajatashatru was the ruler of Magad from about 492 BC to 460 BC. After Koshla Devi death, her brothers confiscated the town with Kashi, and जिससे क्या हुआ, this led to a war between Koshla and Magad. Ajatashatru was victorious. He called the first Buddhist council at Rajgir, right, and he succeeded by son. उद्यान जो थे इनके सन, उन्होंने उसको सक्सीड करा, और जो लास्ट ऑफ द नंदा किंग थे वो कौन थे, आपके धननंदा। Who was not at all popular but overthrown by the चंद्र। इनको क्या करा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने उठा के फेंक दिया था, राइट। आफ्टर दैट वज्जी जो आपकी एक रिपब्लिकन स्टेट है, इट वॉज अ पीरियड ऑफ बुद्धा, इट इंक्लूडेड प्रेजेंट डे रीजन ऑफ मुजफ्फरपुर जो डिस्ट्रिक्ट इन बिहार है, और जो आपके वज्जीज हैं ये सेटल्ड हुए थे नॉर्थ साइड, राइट। देन वी हैव अंगा विच इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट ऑफ मगध, और ये आपके प्रेजेंट डे जो भागलपुर वाला रीजन है बिहार में, वहाँ लाई करता है, राइट। इट्स कैपिटल इज चंपा, अर्लियर कॉल्ड माली, एंड द टाउन्स वाज मेनली फेमस फॉर इट्स ट्रेड के लिए फेमस, राइट। This is all in this chapter. Now let's move to the now among the 16 महाजनपद the most powerful, अगर हम most powerful की बात करें तो आपका कौन था, मगध,
The capital of Magध shifted from Rajgir to, कहाँ हो गई थी? पाटलिपुत्र. Taxes were collected from the people for the king, personal expenses, maintaining international trade, the welfare of the people, या both A and B. So both A and B. Next is monarchies are ruled by group of people, and which object was produced in high quantity as a craft, that is fabric. Who could not participate in the assembly of घन संघ? इसमें से कौन पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था? That is women and subordinate caste. Monarchies were ruled by, monarchies को कौन रूल करता था? That is one person. And which object was produced in a huge quantity as a craft, that is design quantity, right? Next is fill in the blanks. First is the extensive use of iron helped more in the information of kingdom. Gan Sangha is a combination of two words. Gan means refers to death and Sang means people. Gan मतलब क्या होता है आपका? people. एंड संघा मतलब क्या होता है? दैट इज असेंबली. द किंग हैड ऑल द पावर. किंग के पास सारी पावर होती है तो कहाँ होती है? मोनार्क. The king maintained their army by paying their salaries in punched mark coin. The land around the present day Chota Nagpur plateau was rich in dash and dash. किसमें rich था? Iron and mineral. Now write T for true and F for false statement. Farmers would travel to far off places to see their produce. It's true. The excess produce was traded for coins and other products. It's true. The craftsmen were not required to pay any tax to king. False. They also had to pay taxes. Varna system transformed caste into caste during the period. It's true. ग्रामीणी और ग्रामिका they were tax collector. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पावरफुल रूलर था आपका मगध का, वो आपका जातशत्रु. यस, इट्स ट्रू. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ जनपदास? कैसे हुआ? नेम द 16 महाजनपद. आपको 16 जो जनपदास हैं उनका नाम लिखना है. नाउ स्टेट वन बेसिक डिफरेंस. आपको गण संघा और मोनार्कीज में दोनों में डिफरेंस लिखना है. How did Gan Sanghas and monarchies function? वो कैसे function करती थी? I have told you about the 2-3 points that only you can write. How did Magad emerge as the most powerful Mahajanpada? After the formation of Mahajanpadas, development बताना आपको trade का और agriculture. Then you have to tell the political system of Vaji or emergence of village into towns and cities in context to urbanization. That you have to do. Right? Now we have completed this chapter. Hope you understood. Let's meet in the next class. Thank you.